Can you please tell us about yourself? So my full name is Anshul Kumar Devangan, and I have done my schooling from Raipur itself, and I have done my bachelor's in electronics and telecommunication engineering from Government Engineering College Raipur. And after that, I joined Infosys as a system engineer, and right now working in Infosys itself as a test engineer. My current designation role is test engineer. So from last 2.5 years, more than 2.5 years, I'm working here as a test engineer only. So what is the role of a test engineer you are now performing? Sir, my role is related to all types of testing activities, from writing test cases to automating the manual test procedures. That that all the things that is related to testing, I'm responsible for that. You are working in IT company or working in a company as a tester. I think I'm working at a IT company only. So that means you will be doing testing of softwares Software launched testing, yes, for. yes, Can you application. can you tell me roughly every week how many new softwares you will be testing, or you will be testing for a long time the same software? Uh, okay, so in the last 2.5 years, I worked in two projects. First, I was there for 1.5 years, and in second, that I'm working right now. So in first project, roughly 2 to 3 months, I have spent time on writing the test cases, and after that, around 7 to 8 months, I have spent in test execution phase or reporting the test bugs that came in a way. And after that, in this project, I have spent 2 to 3 months in test execution phase. After that, I'm also getting the task of the automating the scripts for automation of the testing procedures and writing the script So, and so for all those things. let me tell you, you are Yes. working in an IT company which Hmm. has been given the responsibility of managing the networking of some X company, and Okay. you will be working all through every day Hmm. on the same project Hmm. Hmm. to find out what are the bugs that are coming, what are the problems they are Hmm. facing, like that. Is that the job you are doing now? Yes. Yes. Okay, good. That's right. So, what are the Hmm. problems you have faced in such situations? See, Problem. you are Yeah. now taking care of the bugs, removing of bugs of others. Yes. Yes. So now Yes. tell In quality assurance. what nature of problems or bugs, or I don't know what are the other terms to be used, that you get during the last 1 year, 1.5 years. So what nature of problems and how do you try to tackle them? So it is a whole process that is involved. Uh, in test plan, we do first the SRS study, that is software requirement specification document that we study, and according to that, we write the test cases. Like what are the features, what are the uh, stories that is given in the SRS document. So according to which we write the test cases for every stories. We try to cover the every stories so that every feature is uh, all the critical features are working fine. So we try to uh, accommodate all the tasks in such a way. And if after the first release of the after the first release, second release, whenever the release comes of the product or software, we try to execute those test cases, and we evaluate on the basis of the expected results and the actual results. So on the basis of that, if it doesn't match the actual result, it doesn't match the expected result that is given in the SRS document, we call it a bug, and we try to solve it. We try to report this bug to the developers. We do report these bugs to the developers so that the developer can fix it on time, and the features is
features, all the features of the first or the functionality of the software works according to the expected document that is given by the product owner. So that is the And I main understand now. motive. So now that means your job, what is the designation you are? Software tester, correct? Software, yes, software testing, Acha, can you tell me, test engineer, test yes. engineer, can you tell me what is the what are the ways by which you are now doing software testing? Supposing you are in network testing, what are the Hmm. things you will be doing there? What is network So testing? So in network testing, we have the procedure that is called VAPT, that is vulnerability assessment and penetration testing. So in that network testing, we try to we try to assess all the vulnerabilities that may come according to the WASP, that is given the top 10 recommendation of the flaws or issues that may create in a particular software. What is So we ping? try to, What is ping? yes, What is ping? the ping is a command which we use to just for the broadcasting, just for the that is just a broadcasting um command, so that we can get the information of the all the routers that is in the network, all the network components that is in the network. What is jitter test? Jitter test is, sir, whenever there is a whenever we make any request in the web application, that is the response time, and that is uh, that is the response time for every packets or the data that may come that come uh, in the form of response. So jitter is basically a defect or flaw in which all the packets doesn't align in a particular way, doesn't align in a particular way, and it mismatch the quality of the data that is quality of the response that is coming. How to So run a ping, sorry, network ping network test? yes, How uh, to run how to ping hmm, network test? ping networking test. हम्म, आप तो जानते हैं type cmd to bring up the हाँ command हाँ prompt. हाँ, What is that? command prompt. Then after that, Hmm. that is just the terminal window. Hmm. Open the In command which prompt, type ping in the okay. blank box and hit the space bar. Type IP address you would like to ping 192 dot 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 dot. Hmm. Review the ping results display. Do you have a similar procedure for testing softwares? No, no, no. That Hmm? we don't do. There is No, there that is no is no, there is no such ready-made tool like this. no, no, no. I have not. I don't know this there or not, but I have not worked on it. Mhm. Here there are some. I think you must have seen these questions. What is software testing? What are the different types of software testing? Different Mm-hmm. types of software testing techniques? Different Yes, levels of software testing? Best yes, yes, practices of software testing? Benefits yes, of software testing? yes, Conclusion? yes. Like this ये सब जानते हैं ना आप? हाँ हाँ, आपने देखा है ये किस साइट पर देखा है आपने? सर मैंने चैट जीपीटी से भी सर्च किया था एंड ऐसा नहीं है, इधर में गूगल। रेडीमेड मिलता है आपको. अच्छा, गीक फॉर ग्रीक्स. गेक फॉर गेक्स में। हम्म. अभी आप लोग का कुछ ग्रुप में डाला नहीं डाला हमने? नहीं. नहीं, ओनली न्यूज़पेपर ग्रुप दिया? नहीं दिया? या न्यूज़पेपर ग्रुप है। न्यूज़पेपर टू ना, N2 ना? यस यस, एंड टू न्यूज़पेपर टू। हाँ, उसमें डाल देगा. हम्म। So this is, I think this is nothing very difficult for you. You can हम्म। get to know that easily. So can ओके you ओके। tell me what are the best practices for software testing? सर बेस्ट प्रैक्टिसेस
फर्स्टली हमें ज़्यादा ओवरवेलमिंग टेस्ट नहीं करना है, जिससे कि हमें टाइम का हमें टाइम का कवर ही ना करना पड़े, और टाइम के अकॉर्डिंग ही हमें टेस्ट करना है, हमें ओवरवेलमिंग टेस्ट नहीं करना है, लिमिट में करना है। एंड हमारे जितने भी टेस्ट केसेस हम बनाए हैं उसे हम प्रॉपरली अप टू डेट रखें, एंड टाइम टू टाइम उसे चेंज करते जाएं, सेम जिससे कि हमें सेम रिजल्ट ना मिले बार बार, हमें फीचर्स को बार बार टेस्ट करने में। एंड एंड हमें एंड Hmm. देखना पड़ेगा थोड़ा। Your preparation for this, mostly they may not यस यस। ask, हम्म। but यहाँ पर पूरा sufficient नहीं है. I will show you. ओके। But I don't know whether it is the correct thing. What are the benefits of software testing? Product हम्म quality, customer satisfaction, cost effective, security, like that. But ये हम्म क्वेश्चन आपको नहीं पूछा. हमने ये पूछा, what are the हम्म। best practices of software testing? यस 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 यस। Continuous testing, involve users, then divide हम्म। test into smaller parts, स्मॉलर पार्ट्स। metrics and reporting, then don't skip regression testing. What is regression testing? So regression testing is a type of testing in which we verify, uh, in which when a particular software gets new feature, so we try to test that software in such a way that new feature doesn't affect the previous features that we have already tested. So So, programmers should avoid writing tests, service virtualization, like this diya hai. Then the next mm-hmm. question is benefits of software testing. These are the questions. Hmm. ये सबको clearly पढ़ने से it will help you a lot. Okay, Not okay. that you don't know. ये सब आप जानते हैं. Hmm. These things are all you are doing, हाँ, but you are not able to yes, yes. explain. That is number Okay, one. okay. What is software testing? Different types of Hmm. software testing, different types of software testing techniques, Testing technique. then Hmm. different levels of software testing, best practices for Hmm. software testing, benefits of software testing, conclusion, Hmm. frequently asked questions like what is the purpose of Hmm. software testing, what is a software testing tool, which testing Hmm. is best, then Hmm. software engineering tutorial, like that. So many things are there. ये थोड़ा पढ़ लीजिए. Okay, okay. Not that you don't know. आप जानते हैं Hmm. फिर भी एक बार पढ़ लीजिए. Which Okay. languages did you study, please? जावा, अभी जो काम कर रहा हूँ उसमें जावा ही यूज कर रहे हैं। अच्छा. Now अभी अभी आपका कंप्यूटर फील्ड में what are the हम्म। languages that are more prominent or more used? No doubt Java is used. Apart जावा, from that, तो स्क्रिप्टिंग के लिए जावा स्क्रिप्ट अभी बहुत ट्रेंड पे, जावा स्क्रिप्ट बेसिकली हर जगह काम आ जाता है। mm, एंड जावा तो है ही, मतलब एक कोर लैंग्वेज है, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी है, एंड मोर सिक्योर वर्जन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एंड डिपेंड करता है कि हर लैंग्वेज अच्छे हैं, बट वही है कि कौन सा कंपेटेबल है किस जगह पे, कहाँ पे, कौन यूजर्स वहाँ के डेवलपर्स कैसे हैं, इट डिपेंड्स। और कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, किस में ज़्यादा कंफर्टेबल है। mhm. Top programming languages 2024. हम्म। Python, हम्म। Java, JavaScript, C++, हम्म। like that. हम्म। This is ओके there ओके। in spectrum.ieee.org. हम्म। I am giving this in your newspaper. वो भी हम्म। देख लीजिए आप. Okay. ओके ओके। Not that you don't know, but पढ़ लीजिए.
ओके ओके। अच्छा जी. Now let us come to bank. Which bank are you having account? SBI। अच्छा, SBI is using which CBS solution? CBS solution, नो आइडिया। You are a डोंट network नो सर। engineer. You are a software engineer. You are a computer man. Should you not know the expansion of CBS, core banking नो सर, solution? नॉट। यस यस यस, या कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। यस। बिना ये जाने आप तो नेटवर्क में काम नहीं कर पाएंगे. What are the हम्म। famous CBS available in India? सर, गो थ्रू नहीं किया इसमें, देखा नहीं है। One is Infosys Finacle, the other is TCS Banks. ओके थोड़ा ये सब का बारे में आप जनरल बैंकिंग का बारे में थोड़ा ये सब पढ़ना है. ओके ओके। What is the role of IT in banking? सर, आईटी बेसिकली एक, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ईज कर पाए हम ऑल द बैंकिंग प्रोसीजर्स, दैट इज करेक्टली वी डू करेंटली दिस बैंक डू। इस चीज़ को ईज कर पाए आईटी की हेल्प, इंफ्रास्ट्रक्चर की हेल्प से, न्यू टेक्नोलॉजी की हेल्प से। So what is your जैसे कि basic हम degree? प्रोसीजर, Computer और electronics? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। अच्छा, इसलिए आप कुछ लैंग्वेज ज्यादा नहीं पढ़ा. नहीं पढ़ा है, हम्म. जावा ही पढ़ा है, जावा। कॉलेज में तो सी प्लस प्लस पढ़ा था, उसके बाद फिर जब Why have you इन्फोसिस not ज्वाइन किया। prepared for these questions? ये सब questions हमने आपको दिया हुआ है. Yes or no? ओके ओके। I am not talking about यस यस। software testing, but these things I have given हम्म। you. But why have you not prepared with ready-made answer? ओके। In fact, this is the very routine questions asked this year. Tell us about हम्म। yourself. Tell us about your current role. What did you do at your previous organizations? Is your current role non-technical? How is your current role relevant to IT? Why do you want to join banking? What is the role of IT in banking? Then I mentioned यस cyber यस सर। security. This is the हम्म। interview, बाबा. 100% आपको भी यस यस। इसमें से 60% क्वेश्चन आएगा. हम्म। Tell me, what type of cyber security challenges are there in banking sector? साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस, हाँ. सर ऑल द अटैक्स दैट इज दैट हैपेंस इन द। हम्म. हेलो। ऐसा बोलने से कैसे मार्क देगा हम बताओ. Will you give mark for a candidate who is giving this answer? Tell me. नो नो सर, आई नो। क्यों नहीं प्रिपेयर किया आपने? वो नाम सब बताना है. Some हम्म। cyber, I don't remember them, sorry. मैन इन द But मिडिल, I, मैन इन द मिडिल अटैक। हाँ, बहुत कुछ है, वो सब क्लियरली हम्म। बताना है. That you फिशिंग, must be, and स्पूफिंग। you must be able to talk about each and everything. यस यस। प्रिपेयर कर दीजिए. ओके ओके। What is ransomware? सर रैंसमवेयर एक वायरस है जो कि टारगेट यूज़र को एज अ टारगेट यूज़र के सिस्टम में डाल दिया जाता है, जिससे कि टारगेट यूज़र पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर पाता। उसके लिए एक रैंसम, जो भी अ, जो भी विक्टिम है, जिसने भी ये किया रहता है, उसने उसे उस वो एज अ रैंसम मनी कुछ भी मांगता है यूज़र से, टारगेट यूज़र से, सो दैट कि वो टारगेट यूज़र अपने सिस्टम को वापस से एक्सेस कर पाए। Hmm. How do you tackle this in banking? सर ऑल द
ये जितने भी सब वायरस अटैक्स है उसके हम एक सिक्योरिटी प्रोसीजर के थ्रू हम उसे अवॉइड कर सकते हैं, जैसे जैसे दैट इज बेसिकली द OWSP, दैट इज गिवन द टॉप 10 vulnerabilities that can happen. So all the vulnerabilities we try to assess in a time, in a properly manner, and we try to eliminate all those things, हम्म because एक भी थोड़ा सा भी loophole or vulnerability, it can be disaster to a particular system. हम्म तो इसे टाइम टू टाइम असेस करना बहुत ज़रूरी है. अंडरस्टैंडिंग ransomware attacks, then हम्म. बोलता है cost of bank ransomware attacks. A bank ransomware attack can have far-reaching consequences beyond just paying ransom. Below are some of हम्म. the most significant costs associated: ransom payment, data breaches, operational downtime, reputational damage, then increased cyber security spending, employee training, multi-factor authentication, data backup and recovery plans, network segmentation, proactive threat monitoring, incident response plan, partnering. अच्छा, this is company, a company का है. Diverge IT is a company which helps in the data breaches and all. Okay, so I am giving हम्म. this in our mm, IT officer. Yeah, and I am also giving you in our newspaper. बहुत कुछ देता ओके. है न्यूज़पेपर में, ये सब ओके. पढ़ना ओके. है. Your हम्म. preparation has to be improved. हम्म. Yeah. Now, can you answer any one of the any two questions out of these questions appearing on the screen? मीन्स टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. No, no, here. That is what is appearing. I'm sorry. Hmm. Two questions I want you to answer. ओके. When did you join my group? 1 week बिफोर, 5th and 6th. 5th and 6th of January. Acha, you can answer 5th and 6th No, no, question. no. Answer 5th and 6th. Yeah. Yes. Please answer me. Good. I'm happy. Hmm. सर, एप्लीकेशन गेटवे एक न्यू टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम जो कि मेनली एक एप्लीकेशन में इंस्टॉल होता है, सो दैट कि यूजर्स उसमें पेमेंट वगैरह कर पाए. एंड ये गेटवे ऑल द डेटा जो भी यूज़र इंफॉर्मेशन है, यूज़र क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो भी पेमेंट जिससे भी पेमेंट करने वाला, लाइक क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड जो भी उसे यूज़ कर रहा है. सो एप्लीकेशन गेटवे का काम होता है उस चीज़ को एनक्रिप्ट करके पेमेंट प्रोसेसर को देना. पेमेंट प्रोसेसर उस चीज़ को पेमेंट प्रोसेसर इज अ payment processor is just a mediator between the banks, so that it can uh, transfer the money of the particular user to the particular merchant that he or she is transferring. So एप्लीकेशन गेटवे लिंक करता है पेमेंट प्रोसेसर के थ्रू, पेमेंट प्रोसेसर से, या पेमेंट प्रोसेसर उस चीज़ को पेमेंट को प्रोसेस करता है थ्रू द बैंक्स. So that is the technology that is mainly installed in the, all the applications for facilitating all the payment payment Mhm. of the users. Good. It's a good answering. Go to question हम्म. number 6. सर, फायरवॉल एक एज अ एक सिक्योरिटी मेथड है जिससे कि हम मॉनिटर करते हैं ऑल द ट्रैफिक डेटा दैट कम इन अ नेटवर्क Hmm. फॉर अ पर्टिकुलर सिस्टम. एंड इसके टाइप्स, बहुत सारे टाइप्स हैं, लाइक पैकेट फिल्टर, पैकेट फायरवॉल्स, पैकेट फिल्टर फायरवॉल्स, एंड स्टेट
stateful and stateless firewalls. हम्म, बोलिए बोलिए। यस, एंड हार्डवेयर फायरवॉल्स भी होते हैं। सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स में तो ये तो है ही। हम्म, डिपेंड करता है कि कहाँ हम यूज़ करना चाह रहे हैं, उसके बेसिस पे हम यूज़ करते हैं। हम्म, हाँ, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, देन। हम्म स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल, नॉन करेक्ट। स्टेट भी होता है, एंड नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स, प्रॉक्सी फायरवॉल्स। हम्म, देन। देन सर हार्डवेयर फायरवॉल्स भी होते हैं। हार्डवेयर फायरवॉल, सॉफ्टवेयर फायरवॉल, नेक्स्ट, हम्म next नेक्स्ट जनरेशन generation फायरवॉल। firewall. हम्म So these things you must be able to explain. Can you explain about ओके। circuit level gateway firewall? सर्किट लेवल गेटवे। Mm, तो सर्किट लेवल गेटवे, गेटवे बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर पे वर्क करता है, एंड ये प्रोटोकॉल को भी एग्जामिन करता है। जो भी जिस जो भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिस भी नेटवर्क में, उसमें ये प्रोटोकॉल भी एग्जामिन करता है विच प्रोटोकॉल दैट वी आर यूजिंग फॉर द डेटा ट्रांसफर एंड ऑल। एंड mm. ये पैकेट तो फिल्टर करता ही है, बट ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर इट टेक्स। That Good. is the main thing. Excellent. What is your father? Yes. Your father. What is he doing? Sir, my father is an accountant. It's a mother. Mother is housewife. How many siblings you have? One younger sister. Okay. Now, Hmm. what are your strengths? Sir, my strength is very hardworking, and I am passionate about my work that I am doing right now. That is in the software domain that I am working right now. Excellent. Excellent. And You are in all the Uttar things. Pradesh, No, Chhattisgarh. Chhattisgarh. अच्छा, Chhattisgarh Yes. is a state where there is no unemployment. That's what newspapers tell us. पता नहीं really क्या होता है। No. हाँ, Hmm. बोलता है हरियाणा is the maximum unemployment, and Hmm. Chhattisgarh is unemployment बहुत कम है. Is it true? अब देख के तो लगता नहीं सर, मतलब जिस टाइप का कंडीशन है। Do you have मतलब some आसपास of के your लोगों को देखो ऐसा Do लगता नहीं you है। have some of your friends not employed? Yeah, a lot of my friends are already unemployed right now. अच्छा, oh, I am really Hmm. sorry. Anyhow, this is Because the बिकॉज सर impression यहाँ पे our newspapers tell us. आई डोंट नो किस बेसिस पे वो ऐसा They are telling डेटा like निकला that. है, बट हाँ, बिकॉज यहाँ पे कॉर्पोरेट के नाम पे कुछ है नहीं अभी छत्तीसगढ़ में। बिकॉज आईटी I आईटी know, वगैरह भी कोई बिग कंपनी कोई है नहीं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। correct. That's the thing. I understand that. हम्म Very good. Anyhow, this first interview, you have not done bad, but you have not done very हम्म good. What is your ओके। estimation? कितना मार्क देंगे आप 100 को? 60। करेक्ट, एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल सेम मार्क्स मेरा मन में हम्म आया था. बट दैट इज नॉट सफिशिएंट हम्म सन. दैट इज नॉट सर सफिशिएंट. बेसिकली सर क्योंकि क्योंकि आपको हम्म कंपटीशन ज्यादा होता है. नंबर ऑफ हाँ वैकेंसीज लेस, पीपल हम्म कंपटीशन मोर. थोड़ा क्यों नहीं पड़ता है? अरे भाई, आप अपना अभी जो काम में चलता है उसको क्यों ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं? थोड़ा थोड़ा इधर भी हम्म कंसंट्रेट करो. सर क्या है ना, क्वेश्चन का आंसर पता रहता है, बट ना वो समझाने का बोलने नहीं तरीका, आता है, मतलब जो बोलने रहता है नहीं ना, आता हाँ है. बोलने ही नहीं आता, तुरंत निकलता नहीं है मुंह से। ऐसा हो जाता है। सेम थिंग विद द तुरंत अदर तुरंत बॉय तो आल्सो. देयर इज वन मोर बॉय आल्सो इन आवर ग्रुप. उनको हम्म, भी ऐसा ही प्रॉब्लम है. एंड मोस्टली लैंग्वेज प्रॉब्लम भी है. इंग्लिश, अंग्रेजी में उतना लव नहीं है. हाँ
ये प्रॉब्लम लैंग्वेज तो होता, मेरा ठीक है but बट। you are better than him. You are 80% okay for language, but हम्म। not for content में थोड़ा थोड़ा गैप होता है. I am not asking हाँ। anything other than your field. हम्म। आप अभी रोज सुबह से शाम तक क्या करते हैं उसका बारे में तो पूछ रहा है. उसका अलाइड कुछ एरिया होगा जो आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं. उसको थोड़ा आप मेहनत लेके पढ़ना है. बट वन थिंग आई टेल यू, हम्म। your interview, this interview is supposed to be very good. I should not praise myself. हमने हम्म। इतना सो रिलेवेंट क्वेश्चंस आपको पूछ लिया. ऐसा में भी हम्म। ज्यादा समय पर हमको नहीं आते हैं. बिकॉज आपने शुरू हाँ। किया दैट यू आर इंटरेस्टेड इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. इसी वजह से आई कुड गो इन टू दिस एरिया. आई कुड लिंक नेटवर्क ऑल्सो एंड आस्क. So it all हम्म। depends on the way you speak. If you speak like this is how the questions will come. हम्म। थोड़ा इसको prepare कर दो and be ready for ओके। other area questions I have given you. Only हम्म। 11 pages material is there. Why are you not preparing? इन ग्रुप सर। No, no. Why are you not reading by yourself so that you can answer my questions correctly? ओके। हमारा ओके ओके। 60% mark is not sufficient. हम्म। अच्छा. Anyhow, I'm not threatening you. Don't worry. Next नो नो। interview date आपको दे दिया हमने. हाँ। Hello. Have I given you next हाँ। interview date for you? यस यस, नो 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 नो, नॉट गिवन। Which date is your interview? 2 जनवरी। अरे भाई, किधर? दिल्ली? नो नो, हाँ, वेबएक्स पे है। ऑनलाइन. हाँ. यस सर। हाँ। वेर? ऑनलाइन? यस यस सर। वो तब तो बढ़िया है. यू हैव गुड इंटरनेट कनेक्शन एंड हाँ। ऑल. नो प्रॉब्लम. या हाँ। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, then when would you like to meet me again? 1 तारीख को, 1 तारीख को कर सकता हूँ। Same time, 10:50 p.m. ओके। ओके सर। Best wishes. God bless you. You are थैंक यू not सर। bad, but और भी improve कर सकते हैं. यस यस सर। God bless you. You did well, but I only wish हम्म। you should be able to score more marks. And I thank. क्या नाम है आपका? अंशुल। I thank Anshul for bringing me to a new line of thinking about testing. इतना दिन उसको बारे में हमने concentrate नहीं करते थे. अभी हमको इंटरेस्ट आ हाँ। गया. थैंक यू. ओके ओके। थैंक यू सर। Best wishes. I wish you success. थैंक यू Anyhow, सो मच we'll सर। meet again. Don't worry. ओके ओके।